Welcome back to your maths class. Students, today we are starting exercise 6E, which is based on the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? You will directly learn this identity and how we will use it. Let's check. For example, if you have y square minus 9. First of all, you will write it in the form of difference of squares, right? Difference of squares means y square minus means difference 3 square, right? 9 can be written as 3 multiply 3, it means 3 square, right? So this is the difference of squares. Now this is in the form of a square minus b square, which is equals to a plus b. What is a here? Y plus b is 3 into a minus b. What is a here? Y minus b is 3. It means जो भी बेस हैं एक बार उनको ऐड करेंगे and जो भी बेस हैं एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, right? So let's practice with some more questions. Question number 1 of this exercise 6E is factorize the following expressions. This is a square minus 4. So first of all, we will write it in the form of difference of squares. So a square minus b square. What is b square here? 4. And 4 can be written as 2 into 2. It means 2 square. So I'm writing it as 2 square, right? Now this is in the form of a square minus b square. So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? And what is a here? A is a. So this can be written as a square minus 2 square can be written as a plus b. It means a plus b is 2 into a minus b means a minus 2, right? This is your answer. Next, question number 4. First of all, this is a square. I will write it in the form of difference of squares, right? 49p square can be written as 7 multiply 7, 49. P multiply p means p square, right? So 49p square can be written as 7p into 7p, or we can also write it as 7p square, right? So I'm writing it as 7p whole square minus this 16 can be written as 4 square because 16 is equals to 4 into 4. Now this is in the form of a square minus b square, right? जो फर्स्ट बेस है उसका स्क्वायर हो रहा है माइनस जो सेकंड बेस है उसका स्क्वायर हो रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. So we will use the identity a square minus b square is equals to sum of the base a plus b into difference of the base a minus b. Clear? So similarly we will do here 7p square minus 4 square is equals to sum of the base, it means a plus b, 7p plus 4, difference of the base 7p minus 4. Clear? This is your answer. Next, question number 6. First of all, write it in the form of difference of squares, right? So this a square x square powers are same, so we can also write it as ax whole power 2, right? This you have learnt in exponents. So I'm writing it as ax whole square minus y square.
Now this is in the form of a square minus b square, where a is ax and b is y. So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? So this ax whole square minus y square can be written as a plus b means sum of the bases, that means ax plus y into difference of the bases, it means ax minus y. This is your answer. Next question number 10. First of all, I will write it as the difference of the squares. Why? कुछ स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि मैम हम इसको ट्रिपलेट्स की तरह क्यों नहीं कर सकते, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म्स गिवन है. अगर 3 टर्म्स होती हम उसकी तरह ट्राई कर सकते थे जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, राइट? सो सिंपली वी विल write them as the difference of squares. So 100b square can be written as 100 means 10 into 10, 10 tens are 100. B square means b into b, so this is 10b into 10b. We are multiplying 10b 2 times, so power will be 2. So this is 10b raised to the power 2 minus 81 can be written as 9 into 9. 9 nines are 81. It means 9 raised to the power 2. Now this is in the form of a square minus b square, right? So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? So we will write this 10b whole square minus 9 square as, first of all, sum of the bases 10b plus 9 into difference of the bases, that means a minus b, 10b minus 9, right? This is your answer. Next question number 13. Now students, this is b raised to the power 4, right? And this is 100 and we want to write it in the form of difference of squares. Squares का difference लिखना है, but there is power 4. So हम इसको square की form में कैसे लिख सकते हैं? अगर हम b raised to the power 2 raised to the power 2 लिखें, this is equals to b. When there is power of power, it means we will multiply the power. So this is b raised to the power 4, right? So this is clear that we can write b raised to the power 2 whole power 2 as b raised to the power 4. So b raised to the power 4 को b square raised to the power 2 लिख सकते हैं. So I am writing this b raised to the power 4 as b square whole square minus this 100 can be written as 10 into 10. 100, it means 10 raised to the power 2, right? This is 10 raised to the power 2. This is in the form of a square minus b square, where a is b square, a क्या है b square है, and b is 10, right? Because इन्हीं की power 2 है. So we will use the identity of a square minus b square, which is a plus b into a minus b, right? So here b square whole square minus 10 square can be written as a plus b. What is a here? B square, right? That means first of all we add the bases, which is b square and 10. And secondly, we subtract the bases, b square minus 10. So this is your answer. Next question number 15. First of all, write it in the form of difference of squares, right?
टू स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे. क्लियर. सो 144 कैन बी रिटन एज 144 को कैसे लिख सकते हैं 12 into 12. Right. So I'm writing it as 12 square minus this is a raised to the power 6, but we want to write it as the difference of squares. So कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं 3 into 2. 3 2s are 6 एंड पावर्स कब मल्टीप्लाई होती हैं जब पावर की पावर हो. राइट. सो स्क्वायर वाली पावर को होल पावर बना देंगे. सो दिस a raised to the power 6 can be written as a cube raised to the power 2. Right. So I'm writing it as a cube raised to the power 2. Now this is in the form of a square minus b square, where a is 12 and b is a cube. Right. So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Right. So first of all, this 12 raised to the power 2 minus a cube raised to the power 2 is there. So first of all, we will add the bases, which is 12 plus a cube. Then subtract the bases, 12 minus a cube. This is a plus b into a minus b, and this is your answer. Next, question number 18. First of all, write it in the form of difference of squares. So 1 upon 4 b square can be written as 1 ones are 1, b multiply b square, 2 multiply 2 4. So we can write it as 1 upon 2 b whole square. Right. So 1 upon 2 b whole square minus 49 can be written as 7 7s are 49. It means 7 square. So this is in the form of a square minus b square, where a is 1 upon 2b and b is 7. So use the identity of a square minus b square, which is a plus b into a minus b. Right. So this 1 upon 2b whole power 2 minus 7 square can be written as a plus b. So what is a here? 1 upon 2b plus 7. This is b. Right. Into, now subtract the bases, 1 upon 2b minus 7. So this is your answer, 1 upon 2b plus 7 into 1 upon 2b minus 7. Next question, question number 19. This is c square. This is already in the form of square. First of all, we will write this 0.36 in the form of fraction. Remove decimal, 1 in denominator. After decimal, there were 2 digits, so we will put 2 zeros. Right. So this is 36 upon 100. Right. And 36 upon 100 can be written as 6 multiply 6 36 upon 10 multiply 10 100. So this can be written as 6 upon 10 raised to the power 2. But you know that 6 upon 10 means 6 upon 10 का मतलब और क्या होता है? In denominator you have 1 0 ना, right? So you will put decimal before 1 digit here. So this can be written as 0.6. 6 upon 10 can be written as 0.6 and then its power 2. Right? So 0.36 can be written as 0.6 raised to the power 2. Now this is in the form of a square minus b square, where a is c and b is 0.6. So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Right? So c square minus 0.6 square
can be written as a plus b. What is a here? C plus b is 0.6 into a minus b. What is a here? C minus b is 0.6. So this is your answer, c plus 0.6 into c minus 0.6. Next question, question number 25. First of all, write it in the form of difference of squares. So 81 can be written as 9 9s are 81. It means 9 square minus x minus 7 whole square. This is already in square, right? So this is in the form of a square minus b square, where a is 9 because 9 का square है, and b is x minus 7 because x minus 7 whole का square है, right? So a is 9 and b is x minus 7. So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? So this 9 square minus x minus 7 square can be written as a plus b. What is a? 9 plus what is b? x minus 7. Students, firstly I am writing it into the bracket. पहले मैं इसको bracket में ही लिख रही हूँ to avoid mistakes, right? Into a minus b. What is a? 9 minus what is b? x minus 7. आप पूछेंगे कि मैम आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं किया, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर b क्या है? b जो पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म्स हैं, राइट? x माइनस 7, और प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था? बेस सिंगल ही था. अगर यहाँ पर सिंगल नंबर होता 8 9 y z तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं इसको ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं करती यहाँ पर, बट देयर आर 2 टर्म्स, दैट्स वाई आई हैव इंक्लोज्ड इट इनटू द ब्रैकेट. सॉल्व द राइट हैंड साइड. इसको सॉल्व करते हैं. 9 प्लस आउटसाइड द ब्रैकेट वी हैव प्लस साइन हियर, सो साइन ऑफ बोथ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट विल रिमेन सेम. साइन सेम ही रहेंगे. x प्लस में था तो प्लस का ही रहेगा, 7 माइनस में था तो माइनस का ही रहेगा. नाउ ब्रैकेट 9 आउटसाइड दिस ब्रैकेट वी हैव माइनस साइन हियर, राइट? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं. x के पास कोई साइन नहीं था, इट मीन्स दिस वॉज ऑफ प्लस साइन, सो नाउ दिस विल बी ऑफ माइनस साइन. बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो साइन चेंज हो जाएंगे. 7 का माइनस साइन था, नाउ दिस विल बी ऑफ प्लस साइन. नाउ दिस is the numerical term and this is the numerical term. 9 is of plus sign and 7 is of minus sign, so we will subtract them because sign are different, so it will become 9 minus 7 2, this will be of plus sign, and in starting no need to put plus sign, plus x. In this 9 and this 7 both are of plus sign, so we will add them, same sign hai. So 9 plus 7 16 minus x, right? So this is your answer, 2 plus x into 16 minus x. Next question, question number 26. Students, this is x cube minus x. अब आप x cube को अगर x square की फॉर्म में लिखना चाहें, पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x square की फॉर्म में अगर लिखना है तो पावर्स कैसे हो सकती हैं? 2 plus 1, राइट? इट मीन्स पावर्स कब ऐड होती हैं? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. इट मीन्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई किया है, और वी कैन से एक्स को, राइट? सो दिस एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स, बट वी वॉन्ट टू राइट in the form of a square minus b square. So what will we do? There is x common on both the terms, so we will take x outside. हमने क्या किया? x को ब्रैकेट के बाहर ले लिया. Now in the bracket we have x square. फर्स्ट टर्म में से क्या रिमेनिंग है? x तो हमने outside the bracket लिया, so what we left with? x square, right? So right here in the bracket this is x square minus
इन सेकेंड टर्म देयर वाज x ही था और आपने x ही ब्रैकेट के बाहर ले लिया, राइट। x में से आपने x बाहर ले लिया, सो x वन जा x, सो 1 विल रिमेन हियर। स्टूडेंट्स प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप यहाँ पर 0 ही लिख दें, राइट, बिकॉज 0 का मतलब हो जाएगा नथिंग, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, x 0 जा 0, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ आउटसाइड द ब्रैकेट वी हैव x, नाउ वी हैव x square minus 1 in the bracket, and this can be written in the form of a square minus b square. So write it, a square is x square minus 1 can be written as 1 square. Now this is in the form of a square minus b square, right? So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? So this x is outside the bracket. Now a plus b is, a is x plus b is 1 into a is x minus b is 1, right? Now simply open the bracket. These are in multiplication ना, so हम उसको open करके bracket में directly लिख सकते हैं. This is equals to x into x plus 1 into x minus 1. So this is your answer. Students confuse मत होना अगर मैं ऐसे लिखूँ x into x minus 1 into x plus 1. राइट, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, दोनों क्या है, 6 ही हैं, राइट। सो कंफ्यूज मत होना, आप माइनस करके डिफरेंस पहले भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। लेट्स सी हाउ वी कैन राइट इट। 18a square x square. Students, if we will try to write it in the form of square, it is not possible to write this 18, क्योंकि 18 स्क्वायर की फॉर्म में आता नहीं है। 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, 5 5 सा 25, 18 तो नहीं आ रहा स्क्वायर में। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कैन वी टेक समथिंग कॉमन, क्या हम इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। लेट्स सी, 18 कैन बी रिटन एज 2 into 9, right, and this can be written in the form of square. 32 can be written as 2 into 16, and this can be written as the square of 4. So we can take 2 common from both these numerical terms, right? So हम 2 common ले लेते हैं। 2 अगर हम outside the bracket लेंगे, from 18 we will get 2 9s are 18, and we have a square x square. And from 32, if we will take 2 outside, we will get this 16, because 2 into 16 is 32. Now we will write it in the form of difference of squares. So 2 is outside the bracket. This can be written as 3ax whole square, right? बिकॉज 3ax होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 3ax को 3ax से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 3 3 ज़ा 9, a इंटू a मीन्स a स्क्वायर, x इंटू x मीन्स x स्क्वायर, राइट। सो वी कैन राइट दिस 9a स्क्वायर x स्क्वायर एज 3ax होल स्क्वायर माइनस 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर. Now this is in the form of a square minus b square, where a is 3ax and b is 4. So use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? So 2 is outside the bracket, in the bracket a plus b, what is a, 3ax plus b is 4 into a minus b, what is a, 3ax, which is the base of first term, minus base of second term 4, right? Now open the bracket, this is 2 into 3ax plus 4 into 3ax minus 4. This is your
answer. Next question 28. First of all students, this is 3 which cannot be written in the form of squares क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, right? X cube power is 3, so this cannot be written in the form of squares. Y again the power is 1, so we cannot write it in the form of squares. तो हम कुछ कॉमन लेने का ट्राई करते हैं, right? So let's take 3 common because 3 can divide this and this both, right? अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे we will get 1, right? So in the bracket we will get 1, and in the next term from 343 if we will take 3 common, 3 8s are 24, 3 1s are 3, we will get 81. Clear? We can also take x common because x is in both the terms x. So from first term there is x raised to the power 3. If you will take x, it means x raised to the power 1 common. अगर power 3 में से power 1 common ले लिया, so we will left with power 2. Here there was only x which we have taken common, so no need to write. Now there is y, so we will take y common. From this term we have taken y common, so no need to write it. एक ही y था वो ही common ले लिया है, so उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. From this term y raised to the power 3 was there. Power 3 में से power 1 common ले लिया, so we will left with power 2, right? So we have taken 3xy common. Now inside this can be written as 1x square. x square भी लिख सकते हैं because 1 से multiply करेंगे it will remain same, minus 81y square. Now we will write it in the form of a square minus b square. आप बोलेंगे मैम पहले ही a square minus b square के फॉर्म में है. No, 81 is remaining, right? Because हम होल का स्क्वायर करते हैं, जो सेकेंड टर्म है उसमें होल का स्क्वायर होना चाहिए. क्लियर? So this is 3xy, this is x square. Let's see, 81y square can be written as 9 into 9, 81, y into y square. So this can be written as 9 into y whole square, 9y whole square, right? Now this is in the form of a square minus b square. It means difference of squares. So we will use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right? So this is 3xy, a plus b, what is a here? X plus b is 9y into a minus b, what is a? X minus b, that means 9y. Now open the bracket. This is equals to 3xy into x plus 9y into x minus 9y. This is your answer. Next question number 30. This is x raised to the power 4 minus y raised to the power 4, but you want to write it in the form of difference of squares. It means a square minus b square. So x raised to the power 4 can be written as x 2 plus 2, and पावर्स कब ऐड होती हैं? जब हम क्या करते हैं? बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर. इट मीन्स एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 टाइम्स. सो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 2. Now this is in the form of a square minus b square, where a is x square and b is y square. Clear? So use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Clear? So this is x square whole square minus y square whole square is equals to, write in the form of a plus b into a minus b. What is a here? X square plus y square into x square minus y square.
and this is also equals to x square plus y square into x plus y into x minus y. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास टू टर्म्स नहीं है, राइट. सो आपको इनका ग्रुपिंग करना पड़ेगा इस तरीके से कि वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख पाएँ हम उसको. ठीक है, तो लेट्स सी. देयर इज वेरिएबल एक्स स्क्वायर, देयर इज 2x, देयर इज 1. सो वाई स्क्वायर क्या है, डिफरेंट है, उसको अलग लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको एक साथ लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, बट वी नीड टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसके इक्वल है. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट. सो इस आइडेंटिटी से हमने इसको क्या बना लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर minus y square. Now this is in the form of a square minus b square, where a is x plus 1 and b is y. a क्या है, x plus 1 है, and b क्या है, y है. So use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right. So x plus 1 square minus y square can be written as sum of the bases. These are two terms. a क्या है, two terms हैं a में, right. So I will enclose it into the bracket. previous question में भी किया था ना, जब two terms थी तो हमने bracket में close किया था. So a is x plus 1 plus b is y into a is x plus 1 minus b is y. now open the bracket, inner bracket open करेंगे, x plus 1 plus y into x plus 1 minus y. so this is your answer. now question number 33. students, again we have 4 terms here. so हम क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई इनको एक साथ ले आते हैं, बिकॉज जेड स्क्वायर तो डिफरेंट ही है बिल्कुल. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस जेड स्क्वायर. क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज माइनस 4xy चाहे मैं यहाँ पर लिखूँ चाहे यहाँ पर लिखूँ सेम ही बात है, राइट. माइनस जेड स्क्वायर. नाउ दिस वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. सो एक्स स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2y का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 2 into a is x and b is 2y, right. so we have written this polynomial, this expression in the form of a square minus 2ab plus b square, and this was the identity of a minus b whole square. so what is a here, x minus b is 2y whole square. so this can be written as x minus 2y whole square minus z square. now this is in the form of a square minus b square, where a is x minus 2y and b is z. so use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, right. a क्या है, x minus 2y है ना, a में 2 टर्म्स है तो मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज करूँगी. so
outer bracket a x minus 2y is a plus b is z into a x minus 2y minus b is z. Now simply open the inner bracket x minus 2y plus z into x minus 2y minus z. This is your answer. So students, with this question your exercise 6th E is completed. Lot of practice is required in these questions, right? In next class we will start next exercise. Till then keep doing practice and be safe at your home. Thank you. Have a good day.